हेलो। साथ वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसे प्रवाह आज चंद्रयान 2 के साथ हर समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नजर बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. The Vikram lander module, as I mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers perilune, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the apolune, which is the highest point of the orbit from the surface of the moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase, which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of at launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 390 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel the orbiter carried was almost 1683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the moon and then lower it down very close to the moon. As I already mentioned, when the spacecraft was injected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 kilometers to get captured in the sphere of influence of the moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers, and in the process, if you look at it, is almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high-resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So the life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and has, as I mentioned, several scientific measurements.
So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the powered descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान-1 ने खोज ही लिए थे और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं वहां पे प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था, मंगल कक्षत्र मिशन था, चंद्रयान-1 था और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहां पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने। डॉक्टर कुन्नी कृष्ण जी जो URSC के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर VV श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं, वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए, बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश, वो क्षण जहाँ पे उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं। So we just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline of the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Confirm the parameters are accepted. Honorable Prime Minister of India.
moving to the dignitaries gallery. प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाए, डॉक्टर टी के एलेक्स जी, डॉक्टर पी जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 for starting the descent. So Honorable Prime Minister of India seated in the dignity gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery, we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India. And finally, 2 students from each of the state and union territories have been selected to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 students who are here in the mission operations complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान-1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV Mark 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की, ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा प्रक्षेपण। We have the view of the Mission Control Center at the Mission Operation Complex. 8, 7, 6. So short video documentary for you, and just to depict the launch that has happened on 22nd of from Satish Dhawan Space Center. This is the liftoff of the GSLV Mark 3 launcher from Sriharikota. So as you can see, the 2 solid strap-ons, 200 tons each, have been separated. And now we are in the stage where the payload fairing inside which the Chandrayaan-2 space, including the orbiter and lander, is there. The separation of the first stage, the liquid stage L110, and finally the launcher placing the Chandrayaan-2 spacecraft in an orbit of 70 by 39,000 kilometers.
around the Earth. So once the orbit of the Chandrayaan-2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed four earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayaan-2 being placed around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase Good. and it is proceeding towards the moon's orbit, Perfect. and very shortly you will see the Chandrayaan-2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon and start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers, and then subsequently using the propulsion system of the Chandrayaan-2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. So in the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers, and you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in kilometers. By 100 kilometers, 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface, where the power descent operations will be starting. And I think we are very close to the event when the Vikram land thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the power descent operations. जी हाँ, हम करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूवर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर या LOI कहते हैं और इसी बिंदु पर
दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.809 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलुइन लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलुइन 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और जिस समय हम करीब 1:38 सुबह के हम चंद्रमा उस बिंदु पे पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब 35 किलोमीटर होगी, उसी क्षण ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा, इस तरह से ताकि हम उसके चित्र प्राप्त कर सकें। So minus 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the way the total power descent operation for the Vikram lander would be carried out. The descent operation would, as you can see on the screen, 3 minutes to go before we start these operations. So Vikram lander would commence from an altitude of 30 kilometers, and once this descent operation has started, it will be for a duration of nearly 15 minutes before it touches down on the lunar surface. And the Vikram landing sequence is achieved through an autonomous landing sequencer. And just to give an update, the final state vectors and other parameters have already to the Vikram lander 4 hours prior, so it's all ready to go and start. The power descent plan, it's expected to 8 minutes Indian Standard Time. As I mentioned, we are just less than 3 minutes now, and this entire power descent operation will be carried out in 4 different phases of operation, namely the first phase, which is the phase referred as rough braking phase, will bring the spacecraft from 30 kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers. The second phase after the rough braking phase will be attitude and absolute navigation control phase, which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers. And then immediately we will have the third phase of operation, which is the fine braking phase, where we bring down the spacecraft from 5 kilometers to almost at an altitude of 400 meters above the surface where the landing is supposed to happen. And eventually from 400 kilometers, the spacecraft will not have any forward moving velocity. It will be only used to have a vertical descent for a touchdown. So the final phase of operation after the fine braking phase will be the terminal descent phase, where the Vikram lander will be brought from an altitude of 4 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally return. So as we go through these operations, as I mentioned, it will be a 15 minutes of descent. Once the activity is initiated, we will be bringing you some of the medicine, the status, how the total operations are going on. So each of these phases during the power descent are very critical and important in its own way, as it has a very specific objective and the goals to be achieved at phase of operations. So maybe another 1 minute, 19 seconds to go. The further update as far as the descent operation is concerned, the Vikram lander has 4 main propulsion engines, each generating a thrust of nearly 800 newtons. And out of these 5 main engines, the 4 engines are throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, like increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required deboost velocity. Another 48 seconds to go before this deboost or firing of the engines. The 4 thruster engine, throttle engines are carried out. जी हाँ, थोड़े तनाव भरे क्षण जरूर हैं, क्योंकि हम बेहद करीब 32 सेकंड के जब विक्रम को धीरे धीरे उतारा जाएगा नीचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे उतरते समय उसके वेग मान को कम किया जा सके, जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेज कह सकते हैं। और इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान हम जो उसमें लगे हुए 8 थ्रॉटलेबल इंजन हैं, जिससे उसके प्रणोद बल को कम
चार इंजन चार कॉर्नर पे लगे हुए हैं, चार कोनों पे लगे हुए हैं और ऐसा ही एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है और जो वो है घड़ी है वो बहुत ही नजदीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttleable engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1640 meter per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation, when the power descent will be done, is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1640 meter per second to almost 0 second, so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen the view of the Mission Control Center, which Chairman ISRO and Director of URSC and Dr. Suresh briefing the Honorable Prime Minister about the flight event that are going on. So the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हाँ, धीरे धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था और हर घड़ी की हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है और इस समय हम करीब करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और वेगमान लगातार घटता हुआ और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन है उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं, ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ। So almost 2 minutes 20 seconds, and we expect this rough braking phase which was just initiated to last for nearly 10 minutes, during which time the velocity, the orbital velocity the Vikram lander possessed of the order of 1640 meter per second should reach to something like 140 meter per second at the end of the rough braking phase. So basically during this phase it's a real brute force of operation where we are trying to kill the velocity which the spacecraft currently has, making it revolve around the moon with an orbital altitude of 30 by 100 kilometers. So I am seeing on my screen that the velocity from 1680 meter per second has come down to almost 1300, so nearly 350 meter per second velocity for the Vikram lander has been reduced. 3 minutes have elapsed, and maybe another next 7 minutes we should have quite a substantial reduction in the velocity to ensure that at we have almost near 0 meter per second velocity to ensure that the Vikram lander has a soft landing on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough braking phase of operation, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds, and almost I would say 480 meter per second velocity has been reduced, which is clear indication that the entire operations during which the 4 throttleable engines are being fired has been performing absolutely nominally, and the reduction in the velocity, the range it has to, after the descent operation has started, it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at a predefined destination. So I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction. The velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second. So almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just 4 minutes. So another 6 minutes to go before we reach in the mission objectives of the rough braking phase. करीब करीब 6 मिनट का समय 4 मिनट का समय व्यतीत हुआ है, 6 मिनट लगभग और वेगमान कम करने के लिए लगेंगे। इस समय करीब करीब जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां हैं वो अभी रूप से चल रही हैं। इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और चाहे किसी भी
के द्वारा अब तक के आंकड़े हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार तो क्या खरेस देखवा रहे हैं कि बोले जी के तो हो हिंदी में बोल कर The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer, is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is 7.8 to be around 7.4 at the end of. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। आज की ताजा खबर लैंड हो गई है और आप सब लाइव तस्वीर में देख रहे हैं। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने किया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally.
And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to only 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही और अभी हम वर्टिकल Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग
135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point giving confirmation of the safety of the landing site. As retargeting is going on and this is a very good signature for the land. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय आदरणीय प्रधान Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसे आस बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। घटनाएं राष्ट्र चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण खत्म नहीं लो सक्सेस हो आज